Namaste. Welcome to our today's session. This is one of the most wanted and suggested sessions, and a lot of people love this session. So, weight loss is one of the byproducts. अगर आप योग आसन practice करते हैं, so losing your weight, having a flexible body, and all of those are byproducts. So इसको aim की तरह हमें नहीं देखना चाहिए. However, if this is something that you also want, you should keep practicing yoga, of course. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी. तो अभी हम छोटा जो है प्रैक्टिस रखेंगे, and for that there are some really quick आसन्स जो आप कर सकते हैं. Remember, जब भी आप ये सारे आसन करेंगे, it is important that you also have repetitions of it. तो कुछ आसन ऐसे हैं जिनके तो repetition मैं आपको बताऊंगी ही, पर जो आसन है उनके आप कितने लेवल्स कर पाते हैं, कितनी रेपिटेशन कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए ही नहीं, वेट लॉस के लिए ही नहीं, पर एक्चुअली ये कुछ ऐसे आसन भी हैं जो आपके और आसन में भी आपको मदद करेंगे. सो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द रेपिटेशंस. आप उनके काउंट्स, आपकी होल्ड, ये सब बढ़ा सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन टुडे, एक बारी थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए, ब्रीदिंग इन एंड आउट, गेटिंग रेडी फॉर द सेशन एंड रिलैक्सिंग, calming your body and your thoughts. Remembering our gurus, keeping your hands in a prayer position and thanking all the masters, remembering all our teachers, हमारे योगी, saint, remembering God, grateful for all of that. We'll just recite 3 ohms and you can repeat after me. शांति शांति शांति. Now gently opening your eyes, we will get ready for the asana practice. तो आप सबसे पहले अपने मैट पर शवासन की तरह लेट सकते हैं और अपने फिर पैरों को जोड़ सकते हैं. You can keep your legs together and keeping your hands straight parallelly or down on the mat. हम सबसे पहले करेंगे नवासन. तो जो हमारा नवासन रहता है उसमें हम 5 राउंड्स लेंगे एंड 10 काउंट का हम होल्ड करेंगे पोज को. तो उसके लिए आप अपना एक्चुअली ब्रीदिंग चालू रख सकते हैं. अभी ये बहुत बिगिनर लेवल है, तो आप ब्रीदिंग चालू रख सकते हैं और उसको सिर्फ हम 5 सेकेंड्स या 5 काउंट तक होल्ड 10 सेकेंड्स 10 काउंट तक होल्ड करके 5 टाइम्स करेंगे. अभी ये बिगिनर है, ठीक है. तो नवासन के लिए सबसे पहले आप अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाएंगे और बोट पोज पे जो है हम चले जाएंगे. सो टुगेदर विद मी, inhaling normally and exhaling. Now as I say inhale 1 2 3, you will lift both your body sides up and lower, and we will go into Navasan. So inhale 1 2 3 and up. As you raise your full lower body and upper body, keep breathing. And now releasing your lower body
and your upper body, relaxing for 2 seconds and coming back for the second round in Navasana. And I will be doing count mentally, and you can come to Navasana now. Lift up, keep breathing. Exhaling and releasing. Taking a few breaths. We will be going for the third round. And now, with inhalation, lifting your upper and lower body both together, holding the pose. Keep breathing normally. Now keeping your lower body back first and then release your, keeping your upper body back first and then releasing your lower body. So अभी के हम जो last rounds रखेंगे उसमें हम यही process रखेंगे कि हम पहले अपनी release करेंगे upper body and then हम अपनी lower body को slowly, basically हम अपने legs को slowly नीचे ले जाएंगे, ठीक है? And now relaxing, and we'll do for the fourth round. Inhale and lift your body. Very nice. Keep breathing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now releasing your lower upper body first and then slowly lower body. आप सबसे पहले अपना छाती और सर नीचे रखेंगे और फिर आप अपनी लोअर बॉडी को नीचे करते हुए रिलैक्स करेंगे. Now we will be going for the fifth round. Now deeply inhaling and lifting both your body up, upper and lower, coming into Navasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now releasing, सबसे पहले upper body and then lower body नीचे जाएगी. And now you can just spread in Shavasana. Now we will go for सेतु बंधासन. तो सेतु बंधासन आपको पता है होगा. तो उसके लिए now sliding your both feet together and now folding your legs at your knee, keeping your heel close to your thighs and above. जब lift करेंगे with inhalation, you can support your back with your hands. Try to pull them a little inside. आप अपने जो elbows और अपने hands को अंदर की साइड लाने की कोशिश करेंगे. So inhale and up, lifting your back and lower body. Keep breathing. Now exhaling and relaxing and releasing your legs in Shavasana again.
Now turning from one side, आप मकर आसन में जाएंगे. आप एक साइड में मुड़ते हुए हम मकर आसन में जाएंगे. Making a pillow with your hands. Your big toes touching. And now keeping your hands close to your chest and your elbows inside. Lifting your upper body, going into Bhujangasana Cobra. Look up and keep breathing. Now from here, push your full body and come into plank pose. अब जब आप इस प्लैंक पोज में हैं तो आप 10 तक काउंट करेंगे और ब्रीथ भी कर सकते हैं. Exhaling and releasing your body. अब इसके हम 4 more rounds करेंगे and आप अपने mentally repeat कर सकते हैं 10 counts. Now breathing in and pushing your body up again in plank pose. And इधर you have to make sure आपके hands and shoulder एक straight line में है. Exhale and release. Very nice. We'll go for the third round. Inhale and lift up. Exhale and release. Going for another round. Inhale and lift up again. Exhale and release. Make sure when you come down, आप controllably आते हैं, putting strength, energy and weight on your hands and your lower body, especially your buttocks, your glutes and your thighs. So now, जब हम last round पे जाएंगे, making sure आपका सारा force आपके core पे रहेगा, आपके lower leg पे रहेगा यहाँ तक thighs तक and आपके hands पे रहेगा. So now, breathing in and lifting your body up. Keep breathing. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now 10. Releasing slowly. Weight on your hands and your lower body. Relaxing in Makarasana. Now, coming from one side of the body, अब हम एक स्टैंडिंग पोज में करेंगे जो हमारा होता है काली आसन. सो आप अपने पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट या उससे थोड़ा सा दूर रख सकते हैं. फेसिंग आपके जो फुट है फेसिंग फॉरवर्ड्स एंड देन turn your foot to the sides. As you do it, you will be able to bend, right? And now slowly bending and putting your weight on your thighs and your hips
Breathe in and stretch your arms up, engaging your core. Keep looking at front and count till 10. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now release. And now you can slowly come to Shavasana. And relax. Relaxing your body and your mind. Gently coming to one side of the body and getting up. You should definitely go for a final relaxation. अगर आपके पास में और टाइम है तो आप और अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं. For now, we will be ending our session, our short session. I hope you keep practicing these. These will be very useful. So, बस एक final prayer. Thanking all our gurus, remembering all the masters, and thanking God and everyone helping us through this process. Filling our body and hearts with gratitude and love. Thanking and bowing down. Let's end the session. Hari Om Tat Sat. Thank you so much for joining today. Namaste.